वेलकम बैक। और कराची वालों का अल्लाह हाफिज। औरंगी टाउन में करोड़ों की डकैती वारदात में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकला। डीएसपी और उसके साथियों ने घर पर धावा बोला, लूट मार की और फरार हो गए। जाते जाते सीसीटीवी डिलीट कर गए, लेकिन गली के कैमरों से पकड़े गए। वाकये की तहकीकात के लिए डीआईजी वेस्ट को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। कराची के इलाके शरफाबाद के घर में डकैती, मुल्जमान मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और सोना लूट कर फरार हो गए। पुलिस से कहना है 6 मुसल्लह मुल्जमान घर में दाखिल हुए, अहलखाना को जरगामाल बनाया, $2000, 2 लाख रुपए, तकरीबन 50 लाख रुपए का सोना और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासर शहरी ने थाना न्यू टाउन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। महकमा कानून सिंध ने सिंध पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी को गैर कानूनी करार दे दिया। साबिक सूबाई हुकूमत की समरी पर महकमा कानून ने एतराज उठा दिया। महकमा कानून ने सिंध पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी से मुतालिक सवालात भी उठा दिए। निगरान वजीर कानून उमर सुमरो ने नोट में लिखा, ये मुकम्मल तौर पर गैर शफाफ मंसूबा है। मंसूबा लेकर आने वाली कंपनी ने अपनी काबिलियत बताई, न ही माजी का तजुर्बा बताया। मंसूबे में दानिस्ता महकमा सयाहत को नजरअंदाज किया गया। मंसूबे से पहले माहौलियाती स्टडी भी नहीं की गई। केंझर पर सयाहती मंसूबे और 6500 एकड़ अराजी गैर मुल्की कंपनी को देने की मंसूबा बंदी की गई थी। महकमा सयाहत, आबपाशी, फिशरीज से मुशावरत और माहौलियाती स्टडी के बगैर मंसूबा तैयार किया। कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए इम्तियाज शेख, कासिम नवीद और अली हसन जरदारी के नाम तजवीज किए गए। साबिक सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल ने समरी पर दस्तखत के बजाय महकमा इन्वेस्ट को राय का मशवरा दिया। 𝐈𝐬𝐫𝐚𝐿 ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात नैब की टीम चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात के बाद अडियाला जेल से रवाना हो गई। बाबर मलिक से मजीद जानेंगे। बाबर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी हाँ, एहतसाब की खसूसी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 21 नवंबर तक जो है नैब को इजाजत दी है और उनको चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड 21 नवंबर तक मंजूर किया है, जिसके तहत रोजाना की बुनियाद पर नैब की खसूसी टीम जो है अडियाला जेल आती है। आज भी टीम तकरीबन 3.5 घंटे तक अडियाला जेल में मौजूद रही और चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से जो दस्तावेजात थी उन हवाले से सवालात करते रहे हैं। तकरीबन 3.5 घंटे तहकीकात तफ्तीश के बाद ये रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि एहतसाब की खसूसी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 21 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर जेल ही के अंदर जो है नैब को तहकीकात करने की इजाजत दे रखी है। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में कल तक की तौसी कर दी है। अदालत ने खुसूसी अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन और सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स तलब करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती का प्रोसेस क्या था? क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के तहत जज की तैनाती के लिए पहला खत हाई कोर्ट ने लिखा या वजारत कानून ने जज की तैनाती के प्रोसेस का आगाज किया? दूसरा, ये बता दें क्या ट्रायल जज ने जेल ट्रायल से पहले हाई कोर्ट को आगाह किया? रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिकॉर्ड का जायजा लेकर सवालों के जवाब देने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, हमें अभी तक ये नहीं पता कि इसमें चार्ज क्या है। हम सिर्फ जेल में ट्रायल और जज तैनाती मामले पर कानूनी नकात देख रहे हैं। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, काबीना मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल फैमिली और पब्लिक को दूर रखने के लिए किया जा रहा है। इस्तदा होगी अगर जेल ट्रायल हो तो कम से कम जज को तब्दील किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मातहत अदालत ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। साइफर केस में दर्ज एफआईआर में कानून के तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा गया। एफआईआर में मुल्जिम का बराह रास्त ताल्लुक नहीं बताया गया। मेरे किरदार को मरकजी मुल्जिम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। एटीसी बन्नू में 9 मई के केस की समाअत। अदालत ने साबिक सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान वजीर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज कर दी। मलिक शाह मोहम्मद खान वजीर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया। वकील ने कहा, मलिक शाह मोहम्मद खान वजीर को सियासी इंतकाम की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। उनकी तमाम मुकदमात में जमानत हो चुकी है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने और नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। वकील मखदूम अली खान की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त में जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने और मौसूल नोटिस
غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی۔ درخواست میں موقف اپنایا، کونسل نے میرے اعتراضات طے کیے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیجا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ ظاہر کیے گئے اثاثے جج کے خلاف کارروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ ٹیکس حکام کی جانب سے اثاثوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا۔ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو، چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں، بتائیے راجہ محسن۔ دیکھیے، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان بلڈنگ میں جاری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور جو چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو درخواستیں ہیں، جو شکایات ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے ابتدائی جو جواب میں اعتراضات اٹھائے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل پہ اور اس کی کارروائی پہ، ان پر بھی غور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اور اس کے جواب میں اعتراضات عائد کیے تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے، اور آج ان کی جانب سے جو یہ کارروائی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جسٹس سردار طارق کے خلاف جو شکایات تھیں، اب اس معاملے پر جو کمپلیننٹس ہیں انہیں آج شواہد کے ہمراہ طلب کیا گیا ہے اس اجلاس میں۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز۔ اسلام آباد آپ کو لے چلیں گے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس میں شریک ہیں۔ زارا الرٹ ایپ کا اجرا کر دیا گیا ہے، آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے زارا الرٹ ایپ کا اجرا کر دیا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہیں اور بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج اس تقریب میں زارا الرٹ ایپ کا اجرا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی اس تقریب میں شریک ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی موجود ہیں اور یادگاری شیل اس وقت پیش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کو بچوں کی جانب سے زارا الرٹ ایپ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ اس تقریب میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب ہے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس میں شریک ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی توشہ خانہ سے حاصل کی گئی گاڑیوں کے خلاف ریفرنس میں اپنے دفاع سے متعلق جواب داخل کروانے کی درخواست عدالت نے منظور کر لی ہے۔ نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی اجازت دیتے ہوئے سماعت 30 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا، تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جج محمد بشیر نے توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق نیب ریفرنس کی سماعت کی۔ آصف علی زرداری، خواجہ عبدالغنی مجید، انور مجید اور یوسف رضا گیلانی کے پلیڈر عدالت پیش ہوئے اور ملزموں کی حاضریاں لگائیں۔ نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح نے عدالت میں درخواست دی کہ نواز شریف کا دوران تفتیش بیان ریکارڈ نہیں ہوا۔ اسلام آباد لے چلیں گے، وزیر اعظم تقریب سے خطاب کریں۔ Present in this distinguished gathering today, we have assembled here with a shared purpose to protect our children from all kinds of harm. The government of Pakistan remains resolutely devoted to the protection and well-being of our cherished children. We comprehend that our obligations extend beyond the realm of mere legislation and policies. It is imperative for all stakeholders within our society to actively contribute to this noble cause. The government's unwavering commitment to safeguarding our children from all forms of harm, including abuse, violence, homelessness, and abduction, remains steadfast. We fully recognize the immense responsibility entrusted upon us to ensure the safety and well-being of every child within our nation. This responsibility is one that we approach with utmost gravity and acknowledge that it necessitates the collective effort of all stakeholders involved. Our commitment to the protection of our children stems from our profound understanding that they are the bearers of our nation's future. Today, I extend my heartfelt congratulations to the Ministry of Human Rights and the Zainab Alert Response and Recovery Agency, Zara, for their unwavering commitment and tireless endeavors in spearheading this pivotal initiative. I am confident that this initiative will serve as an impregnable fortress
safeguarding the precious children of Pakistan. The timely issuance of alerts pertaining to missing and abducted children will undoubtedly facilitate our dedicated law enforcement agencies in their relentless pursuit to swiftly recover these innocent souls. On this momentous day, we firmly believe that every child deserves a nurturing environment, access to quality education, health care, and the opportunity to develop their full potential. The government of Pakistan remains steadfast in its dedication to upholding the United Nations Convention on the Rights of the Child, ensuring that the rights and well-being of our children are safeguarded at all times. By empowering our children and advocating for their rights, we are building a stronger and more equitable society where every child can thrive and contribute meaningfully to the progress of our nation. Thank you, distinguished guests, for your unwavering support and unwavering commitment to this noble cause. Well, along with this, which I had to narrate what was written, and it is one of the official commitments that you are supposed to do and say things in that role. But when I was thinking about this Universal Child's Day, the children of Gaza was coming to my mind. And the children of Gaza were coming to my mind, not intact children, not protected children. The children who have lost somewhere arms, somewhere legs, somewhere they have lost their heads, the corpses are left. And I'm just wondering what and how should we name them and name ourselves, that how we are witnessing to this children's Holocaust. I would term it as a child's Holocaust in that strip of Gaza by one of the powers which feels it's strong. Yes, the state of Israel has some military might on the basis of which it feels it's very strong. But every moment, every hour, they are proving to be dwarfs. They're minions. They're minions because of their conduct. The professional militaries fight professional soldiers. The professional militaries do not kill unarmed children. I've been repeatedly saying this, that in recorded history, on the advent of the birth of Musa alayhi salam, reportedly the children of Bani Israel were killed by the order of pharaohs. And ironically, the people who claim to be the followers of Moses, after 2 millennia, they are following the footsteps of pharaohs rather than Moses. And that killing, senseless killing, is one of the biggest challenge, be it the Convention of Children Rights, Human Rights, Women Rights. You just multiply it with all the adjective and the nouns of all the rights. I think so United Nations is losing its sense of purpose. I think so the international community is losing its sense of calling itself responsible nations and governments. This appalling and atrocious act has to end. I would repeat it again. This children's Holocaust has to stop, and it has to stop now. The heart of not just Muslims. Let me convey this. Yes, we are not apologetic about our identity as Muslim. We are Muslims.
We are Muslims, and this is a pride which we take for last 1400 years. We are the continuation and the conclusion of Abrahamic faith. But whatever is happening in Gaza is beyond religion. Any decent human being. And the latest figure gives us that they are around 8 billion. Probably you can't even find genuinely thousands of people amongst these 8 billion who could defend such a defenseless act. So the majority of mankind is on other side. From diversified faith, from the diversified background, everyone, men, women, children, elderly, young, are condemning this brutal act, and it should remind us that on this Children's Day, those children of Gaza, we are honestly ashamed of you. I can't look into the eyes of my own son. I feel helpless. I feel helpless because there are implications when we think to respond to such challenges. But let me remind anyone and everyone who's listening to this. These gory images in this age and time of new technology, this is no more a written history. They should not forget. Now it has turned itself into pictorial history. These images would be reproduced, bring back to life after not just a century, rather even a millennia. It would be part of the collective memory of people of different identity groups, and it would lead for the conflict of the future causes of the future conflict. It will not resolve the conflict. It is given birth and giving birth to many more. Probably people are not responding now. Who can guarantee that this behavior will not radicalize within a decade, 2, 3, 5 century? Nobody can. All we pray, and we are trying, along with our global partners on the platform of OIC and others, to raise and pressurize the Western Hemisphere, led by particularly the United States of America, that some sort of rationalization happens, some sort of sanity prevails, and immediately this war should come to an end, and the cessation of violence is an immediate target. This is not justice. This is a just immediate need and requirement. We are not saying that justice would establish when they would have a ceasefire. No, not at all. And the creation of a human corridor is a prerequisite where the children, like our own children, would probably have a chance where they may come back to life. They're vulnerable, their life is at stake, the injured, women, elderly, everyone. It is simply a genocide happening around us. And we have to raise our voice, we have to play a role, whatever we can in our own capacity, be at the governmental level or a societal level, and try and translate that this should come to an end. I thank you all for giving me this opportunity to talk. Thank you. बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेशावर फौजें बच्चों का कत्लेआम नहीं करती। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के मामले पर अपने मक़ासद से हट रही हैं। फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। जो जुल्म फ़लस्तीन में हो रहा है, इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
और आपको बताएं, सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिंध एक्शन कमेटी की अपील पर मुल्क गिर एहतजाज इस वक्त जारी है। कराची का रुख करते हैं, संजय साधवानी वहां पर मौजूद है, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। संजय, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब से सहाफियों की बड़ी तादाद वज़ीर हाउस की जानिब मार्च करते हुए रवाना दवा है। वज़ीर हाउस जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने बार बार रुकावटें लगाकर सहाफियों को रोकने की कोशिश की। जिला कोर्ट से इतरा पुलिस मोबाइल और गाड़ियां खड़ी करके सहाफियों को हरासा किया गया, लेकिन सहाफियों की बड़ी तादाद तमाम रुकावटें तोड़कर वज़ीर हाउस की जानिब रवाना दवा है। इस वक्त सहाफियों का काफिला PIDC के सिग्नल पर पहुंच चुका है, जहां पर पुलिस की जानिब से कंटेनर लगाकर वज़ीर हाउस जाने वाली जो सड़क है उसको बंद किया गया है। सहाफियों की बड़ी तादाद है जो सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आई हुई है। इनका एक ही मुतालबा है कि सिंध के सीनियर सहाफी जान मोहम्मद को सक्खर में सिंध के तीसरे बड़े शहर में कत्ल कर दिया गया, जिसके कातिलों की अदम गिरफ्तारी है। और एक दो दिन नहीं, कई हफ्ते बल्कि महीने गुजर चुके हैं कि सहाफी के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और उल्टा जब उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करने के लिए सहाफी एहतजाज करना चाहते हैं। पुरअमन सहाफी है, कलम के पैरोकार हैं, इनके पास सिर्फ कलम है और लिखते हैं, वो एहतजाज करने आए तो पुलिस ठीक है। मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। संजय साधवानी, आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सिंध एक्शन कमेटी की अपील पर मुल्क गिर एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अलीम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अलीम, बताएगा। जी, सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ PFUJ के कॉल पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इस एहतजाजी मुजाहरे में जुड़वा शहरों से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों की बड़ी तादाद शरीक है, जिसमें जो सिंध से जो चैनल्स हैं, TV चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उनकी भी, जबकि जो इस्लामाबाद के सहाफियों की बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक है। इसमें मुजाहरीन ने जो सिंध हुकूमत का रवैया है, पुलिस का, उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी की है और मुतालबा किया है कि जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और उनको सहूलतकारी की थी उन अफराद को भी गिरफ्तार किया जाए। मुजाहरे से खिताब करते हुए जो नायब सदर है नेशनल प्रेस क्लब नज़ीर चरण, उनका कहना था कि हमें एहतजाज मुलतवी करने की भी दरख्वास्त की गई और एहतजाज की बजाय एक एहतजाजी कैंप लगाने और सिक्योरिटी फराहम करने की भी पेशकश की गई। ताहम हमारा मुतालबा ये है कि जान मोहम्मद मेहर के जो कातिल हैं उनके फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, क्योंकि जान मोहम्मद मेहर मासूमों की आवाज का, जान मोहम्मद मेहर का कत्ल जो है वो मासूमों की आवाज का कत्ल था और उनका ये मुतालबा था कि जान मोहम्मद मेहर के जो कातिल हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिन अफराद ने उनकी सहूलतकारी की उनके कत्ल में, उनको भी फौरी जो है गिरफ्तार किया जाए। और उनका ये भी, यहाँ पे जो जितने भी सहाफी हैं, उनका ये अज़्म था कि जब तक जान मोहम्मद मेहर के कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाते तो ये उनकी अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जो मुजाहरे हैं ये जारी रखा जाएगा और इंशाल्लाह एक दिन जो जान मोहम्मद मेहर के कातिल और उनके सहूलतकार हैं उन तक जरूर पहुंचा जाएगा। जी ठीक है अलीम, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। रुख करेंगे सक्खर का, जहां जहांज़ेब वसीर मौजूद हैं, वो एहतजाज की सूरत हाल बताएंगे। जी जहांज़ेब। जी जहांज़ेब से राब्ता करेंगे। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सिंध एक्शन कमेटी की अपील पर मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। क्वेटा में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि कराची में भी एहतजाज किया जा रहा है और सहाफियों ने प्रेस क्लब से ऐवान वज़ीर आला तक रैली भी निकाली है और मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना भी देंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी सहाफियों ने एहतजाज किया है। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिंध एक्शन कमेटी की अपील पर मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा है। सक्खर का रुख करते हैं, वहां एहतजाज की क्या सूरत हाल है, ये जहांज़ेब वसीर से जानते हैं। बताइए जहांज़ेब। जी बिल्कुल, PFUJ के कॉल पर मुल्क भर की तरह सक्खर में भी सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पर अलामत की गई है, यहाँ पर सिविल सोसाइटी के साथ वकला और सहाफी बिरादरी ने काफी बड़ी तादाद में इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ साथ निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो सहाफी जान मोहम्मद मेहर है उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो सहाफी हैं उनमें बेचैनी की लहर छाई जाती है, पाई जाती है, लेकिन अब तक इस हवाले से उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया और यही वजह है कि सहाफी पहले रोज से लेकर आज तक यही वजह है सहाफी सरापा एहतजाज है। जहांज़ेब वसीर आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया।
ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.